भाइयों बहनों, आज मैं सबसे पहले मणिपुर के लिए एक शिकायत करना चाहता हूं, कंप्लेन करना चाहता हूं। करूं? लेकिन आप बुरा मान जाएंगे तो करूं? कंप्लेन करूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का नहीं मानेंगे? एकदम पक्का। देखिए भाइयों बहनों, आज मणिपुर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग चुका है। आप मुझे बताइए, मणिपुर जो हमारे पूरब का स्विट्जरलैंड माना जाता है, अगर उसकी ये बर्बादी की है, लगातार मणिपुर नीचे ही गया, नीचे ही गया। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर के किसानों का नुकसान किसने किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? मणिपुर के नौजवानों का भाग्य किसने डुबोया? जिस कांग्रेस के इतने गुना है, अब मणिपुर में उस कांग्रेस को एक दिन भी रहने का अधिकार है क्या? है क्या? अब इस बार पूरी तरह साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? प्राकृतिक संपदा से हरा भरा यहां के लोग, सामर्थ्यवान, कानून को मानने वाले लोग, पवित्र जीवन जीना पसंद करने वाले लोग, अगर सरकार 2 कदम चले तो यहां के लोग 10 कदम दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा हमारा ये राज्य है। लेकिन भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट राजनीति का खेल का मैदान बना दिया। एक जनजाति को दूसरी जनजाति के साथ लड़ाना, चुनाव आ जाए तो विकास की चर्चा नहीं करना, काम का हिसाब नहीं देना, सिर्फ एक जाति को, एक जनजाति को दूसरी जनजाति के खिलाफ भड़का देना, लड़ाई करवा देना और बीच में से अपना उल्लू सीधा कर लेना, यही कारोबार चला है। भाइयों बहनों, ये मणिपुर को बर्बाद करने वाले इनके तौर तरीके ये खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मणिपुर की एकता, मणिपुर का विकास, मणिपुर का भला, यही हमारा सपना हो या चाहिए कि नहीं? कोई भी जनजाति हो, पहाड़ी हो या तराई हो, शहर हो या गांव हो, हर किसी का एक समान रूप से भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना? मैं आज आपके बीच में ये विश्वास दिलाने आया हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में सेवा करने का अवसर दीजिए। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. About the fact that you
I cannot, I think, divulge all the things that take place in the cabinet system of government. I think, taking into account the circumstances and the compulsions of a coalition polity, I have done as best as I could do under the circumstances. That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. And women don't want to be saved. We are asking for our rights as equal citizens. This discourse will have to be led by women, and it lies at the core of patriarchy. So this is only image management because the video went viral. This is not constitutional administration. This is not even basic administration anymore. It is quite interesting that the Prime Minister and the Chief Minister both choose the same time to break the silence. And the only common thread running between that was that viral video. And therefore, as I said, I think it is about image management. The nation's shame is that you have a central government and a state government that for over 2 months refused, not failed, refused to take any action on the sexual targeting and degrading of women. The mob can be leashed and reined in only by the state. The question before us is the state interested in reining in the mob? This proves that their tears over the Manipur video are totally fake. And the BJP also cannot be believed, the BJP which went ballistic, and rightly so, over Nirbhaya, tries to save the failed government of Biren Singh in Manipur. And grudgingly, after 3 months, grudgingly speaks about Manipur at a national level. And why? That also, after the video is released right on the eve of Parliament, it is the timing of the release of the video which forces the BJP to speak. The BJP knows it. Would the BJP have spoken about on this issue had it not been for the fact that the ruling party of India faced major political embarrassment on the eve of a Parliament session? Is then one to assume that for the BJP too, crimes against women matter only if it affects them politically? When I ask the BJP, why don't you sack the Chief Minister of Manipur? They say, Arnab, there are national security reasons. Manipur is a border state. Well, for that very reason, because there are national security reasons, because Manipur is a border state, the Chief Minister Biren Singh should have been sacked. And didn't the same Bharatiya Janata Party, the very same party with the very same leaders, demand president's rule in Manipur in 2011 when there was an economic blockade and prices rose? How come the same party which is today in power, both in Manipur and in the center, how is the same party using a different logic now? Yes, ladies and gentlemen, all this proves just one thing, that political parties have their own political interest first. Political parties say they speak for the people, but they speak for themselves, and they speak only about their relentless pursuit of power. They don't speak about public interest. Manipur proves that. Each one of the political parties is shedding crocodile tears. मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है।
और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है। उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। एफआईआर हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं। इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है। ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द, 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर, तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो 2 शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है। आपको क्रोध है, ना आपकी पीड़ा दिखती है, ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो 2 नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था। और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से, माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं आप। इस दुर्घटना के शुरुआत पे अगर हमारी आवाज़ों को सुनी होती, अगर उन्होंने हमारे सीएम के साथ बात की होती और इस दुर्घटना के अंत करने के लिए अगर एक बात भी बोला होता, तो आज ये दुर्घटना यहाँ तक नहीं पहुँचती। उनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इम्फाल पे पढ़ाई चल रही है, स्कूलें चल रहे हैं, लेकिन ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह रहे हैं। हमारी बेटियां और इस देश की बेटियों के साथ में बलात्कार और हादसा हो रहा है। मणिपुर इम्फाल पे पढ़ते हैं आधा से आधा लोग, लेकिन आपको इतना बता दूं कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ये कहेंगे कि आप पहले थोड़ा बहुत शर्म कीजिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इतना जो 70 देश इशूज चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आप कुछ भी नहीं बोलता है। और जो बीरेन्द्र सिंह गवर्नमेंट है वो सब ऑल अक्रॉस द स्टेट, ऑल अक्रॉस द कंट्री जो इसको इस्तीफा देने की मांग कर रहा है, अभी भी उसका सीट बचाए के रखा है, क्योंकि अपना पावर अपना गवर्नमेंट है। इसलिए ये शर्म आनी चाहिए और जो बीरेन्द्र सिंह गवर्नमेंट है उसको तुरंत हटाना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि भाई हम इसको रोकना चाहिए, वायलेंस पीस लाना चाहिए, ऐसे नहीं है, जबरदस्ती से बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो 70 देश जो इशूज चल रहा है उसमें बहुत सारा, अरे ये तो मामूली इशू है, इसलिए कोई
भाई पॉलिटिकल जो इंटेंशन उसके पास नहीं था। अब तक तो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और जो है जो लगातार चल रहा है और जो मॉनसून सीजन भी शुरू हुआ है और पूरा देश एकता होके जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो फेलियर है उनको सामने जो वर्ल्ड के सामने जो दिखाई दे रहा है, इसके कारण जो उसको मुंह को सेव करने के लिए जबरदस्ती से बोलना पड़ रहा है, इसे बोल रहा है। कोई उम्मीद नहीं है मुझे। So we are gathering here against the incident that has been going viral in the social media, which has been circulated in social media, the heinous crimes that has been committed in Manipur. Actually, the incident was occurred on 4th May 2023, and after 70 days, it was gone viral. And now the Prime Minister, who chose to remain silent for more than 2 months, has now spoken up and called it as shameful. Shame on Modi government, shame on you for choosing to remain silent for more than 2 months when all the atrocities has been committed against the people in Manipur, when the lives has been destroyed, the people were being killed, houses were being burned down, properties were being destroyed, and when all those things were happening, he chose to remain silent. But the people in Manipur and from other parts of the country were asking him to speak up about the incidents in Manipur. And regarding the present CM, Chief Minister of Manipur, people have lost their faith, don't have any trust in him, and people have been demanding for his resignation, because we condemn the state government in this the communal violence that has been happening in Manipur. And regarding the incidents that has been going viral, it is a lot of people from across the country are condemning such heinous crime, and people are demanding for a justice against those perpetrators. The government is for the people, right? People, they are the representative, but the state machinery and those so-called those representatives have failed people in Manipur, have failed the women in Manipur, have failed the laboring classes in Manipur. So they should be held accountable, because after the violence has been going more than 2 months. So the government should have resolved it in time. But things are going out of hand. But despite being said this, it doesn't mean that we don't have any hope. It is only the priority. See, it is not, we can't deny the fact that the urgent matter in this state, it should be the violence that has been happening in Manipur. But despite this fact, he chose to ignore. He turned a blind eye to this incident, and that should be the urgent matter. That should be the top priority, because people are being killed, as I've said. So when all the things have been unfolded, all the heinous crimes are being committed, the atrocities against those women, he only now chose to speak up. So shame on you, Modi government, shame on the present CM of Manipur. But we want justice. Until and unless we get the justice for those victims, we will not stop fighting for it. But this video, it just, even for those of us who've seen terrible things in life, it breaks a little part of you. And I can't even imagine what it was like for the women who are in this video, and most of us have seen the uncensored version of it. The Chief Justice is furious. He has said to the government, if you don't act, we will. Do you think that there is some hope for justice, or are you still extremely concerned about what's happening in Manipur, and in particular to the women of Manipur? Barkha, I'm afraid I am not feeling hopeful or confident at all. The Chief Justice of India has said that he's very disturbed and has asked the state to present a report, and they have taken suo motu action, and the matter will now come up again on the following Friday. The reason why one is not feeling hopeful or confident is that while all of us in the country, including the Supreme Court, has learned of this only yesterday, I'm afraid the administration, the Chief Minister of Manipur, and I assume the central government, the Home Ministry, the Prime Minister,
knew that these crimes were taking place. And I'm making that assumption because I'm going to assume that we have a functional government, both at the center and at the state. They would definitely have been informed of the violence. There is a registered FIR on 18th of May. These matters would have been communicated as of great priority and importance in a state which has now seen violence for 2 months. So the Prime Minister and the Chief Justice of India, we cannot say in the same breath in this instance, because the Prime Minister would have known of what is happening. In fact, the Solicitor General on behalf of the centre has, in matters relating to Manipur, and cases have come up before the Supreme Court, have said that the security forces are out there, situation is continuously improving. The Chief Minister, hours after this, less than 24 hours after the video goes viral, and therefore what is most important is it was the citizens' anger and agony which has finally made the government respond and say something. The state machinery failed the people of this country, and definitely the women and people of Manipur. And it took outrage of the entire people for them to think they should do what they should normally have been doing. Yeah. Now a test has been made. In this video, men's faces are visible. The arrest was made. Suddenly they knew who it was, and an arrest has to be made. And of course, complete stuff that we've all heard before. Oh, we will give severe punishment. This is not acceptable, death sentence, etc., etc. As you said, have those women received any attention, medical, other form of help that they need? They are languishing in a camp. They have lost family members. Barkha, please tell me, does this not remind you of Bilkis Banu? Have we not seen this before in this country, where women of the targeted group are hounded, men are killed, women are sexually assaulted? This is not new in this country. Why do we not know that when there is mob violence, when there were fake videos going viral, why is the administration not taking preventive steps? If the administration has failed, if the chief minister suddenly wakes up, how are we as citizens to understand this? Bilkis Banu's remission should haunt each one of us today. And no words of the government are going to assuage women of this country, because that remission is an executive act. The impunity is being signaled from the top. Yeah, it's such an important point also that you mentioned. I think the questions should be asked, is the state administration, is the state government, is the central government, are they acting with impartiality and independence? The onus is on them. It is not whether Barkha has shown one story and 1 minute less of some other community. Why are the questions not being addressed to those who are wielding power over here? And we know, and the chief minister has said this just this morning in one of the television channels, these are not the only case. There are other cases of sexual violence. This has shaken our conscience. But we know that there are many others. People are in camps. Who is going to create that access to justice? Without activists supporting, and I'm sorry, I will say it here, activists are being demonized, criminalized. A group of women went there who are part of various women's groups. They have FIR against them. You are not going to allow activists to enable the access. The state is not there to help women access justice. Lodging an FIR is not access to justice. So how will this country move? We are in a very, very deep crisis. Pious statements saying we are feeling very ashamed and we will give death sentence is not going, nobody is buying it anymore. Women are not accepting it. Where is that Amrit Kal today for these women? Yeah, what are the doing in terms of the investigation? Was any medical examination done? Has any 164 been recorded? Now everybody, NCW and everybody else has sprung into action. What were they waiting for? Is this a joke? The state is not. This was known to the state that this sexual violence and disrobing and parading had happened, was known to the state.
They are not taking any action against that, nor is anything being done to ensure that it's not being repeated and those who have suffered are getting any justice. So it will be the burden of the citizens. Now the citizens will be called activists, they're disturbing law and order. I want this country to please think, what is this phrase law and order all about? Is this about maintaining politicians in power, or is law and order about safeguarding our lives and dignity? This law and order should only be maintained, internet should be shut down to safeguard our lives and dignity, not to suppress the truth and not to keep somebody in power. That's not the purpose, and that's not the reason why the state is given the police, etc., etc. So this will be the task of citizens. Citizens should be allowed to have access. They should prepare. मणिपुर के वीडियो हमने आपने पूरे विश्व ने देखे। देश का सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इनकी एक मंत्री हैं, अपने आप को नेता मानती हैं, स्मृति ईरानी। कल जब सोशल मीडिया से बहुत उनको ताने मिलने शुरू हुए, तब जाकर रात को उन्होंने एक ट्वीट किया मणिपुर पे, और आज सुबह गलती सुधारने के लिए राजस्थान पे भी ट्वीट कर दिया कि राजस्थान में जो बलात्कार हुआ उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया। अरे आप क्या कॉग्निजेंस लेंगी? वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों कार्यकर्ताओं को। वो धर्मपाल हो, वो समंदर हो, वो भट्टम सिंह हो, तीनों को गिरफ्तार कर चुकी हैं जिन्होंने ये बलात्कार किया था। तो आप बैठे रहिए। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए, और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए। वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे, वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए इस देश को विश्वगुरु। इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसका दिल हो, और वो दिल भारत के लिए, इंडिया के लिए धड़कता हो। आप तो भारत और इंडिया में भी विभाजन करा रहे हैं। ये विभाजन की राजनीति जो आपकी है, आज उसी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, मणिपुर भुगत रहा है। देश लानत भेज रहा है आज आपकी सरकार पर। अभी 1 साल बचा है, इस देश को और गर्त में दाने से रोकिए। अपनी इस बांटने वाली राजनीति को बंद कीजिए, इस पर विराम लगाइए, नहीं तो देश का इतिहास आपको कभी 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 माफ नहीं करेगा। यू विल बी रेलिगेटेड इन द डस्टबिन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। Preeti Chaudhary joining us on the phone line for more on that. Preeti, Rekha's response to the delay in cracking down on that complaint, she says, we were trying to verify if these complainants in the first place were legit. We don't know who they are. They're outside Manipur, one outside India, so we were not sure whether to investigate. You know, Nabila, this raises some very, very big questions, and the reason is that the same NCW chairperson, Ms. Rekha Sharma, has taken suo moto action on many cases earlier. Now, what were those cases? They were limited to possibly BJP-run states. There have been charges, especially where the NCW is concerned. It is partisan in nature. There have been enough instances in the past where the NCW, including its chairperson, has not reacted or acted. In this particular case, Nabila, if one takes a look, what really went down in terms of trajectory, once you have a bona fide case from a state which is seeing unprecedented violence against women, you're trying to verify that case while when the news broke, even when the video went viral, what remains to be seen is a look at the timeline on Twitter of Rekha Sharma, where she's taking so much cognizance at a news article at the government looking to act against Twitter for not taking the video down. She's tweeting repeatedly about that. And it was only hours after taking so much of cognizance of the government taking action on Twitter that she has decided that then she tweets out that
action will be taken on the Manipur incident as well. It's not the first incident where we've seen absolutely no action, where Rekha Sharma, who's the NCW chief, the NCW has come into question. It's happened in the time of Bilkis Bano, it happened in the time of Hathras. There are constant, complaints that have been registered that the NCW has begun, or from time immemorial. Several opposition party leaders, different leaders, were saying that the National Commission of Women Chief should step down because in such an important issue, if she was informed complaints had gone, then why was the National Commission of Women not able to take adequate action? The National Commission of Women has failed the country as spectacularly as the Women and Child Welfare Minister of this country. She had information a month from now that some incident like this had happened, but she continued to sit on it. Yesterday, once the video came out, she was shouting from the rooftop to try and pull down that particular video. Because it hurt the image of NCW, hurt the image of the competent minister, hurt the image of the Prime Minister, and she was in a hurry to pull that video down. The question just arises, do we need an NCW chair which is so politicized, who speaks up only not on the issue of women's rights and women's safety, speaks up on the basis of her politics? That is the moot question, and that should be addressed. No, because this question was actually posed to the NCW chief, and she has said that she has written to officials in Manipur, and she has also tried to contact the chief minister, but there was no response to the communications that had gone out from NCW. What does this show? So she is saying that the chief minister did not deem fit in respond to NCW. That means all the more reason for her to abdicate her chair. If she can't do justice to the chair she belongs to, if the chief minister of a state does not respond to her, then might as well wind up the NCW. Just like the Women Child Welfare Ministry has become the troll ministry of India, she can also say that, there is no need for NCW in India. जब से मोदी जी आए तब से महिला सशक्तिकरण चल ही रहा है. How do you see this entire matter? Because on one hand, it is being stated that no action was being taken on the part of the NCW. But today, Rekha Sharma has given a media bite and she has mentioned that we had written 2 letters to the DGP and other officials there as well. NCW has become a party. Did she do a press conference? Did she communicate? For every other opposition states, they jump and start dancing around and making allegations. Shameful. The NCW, these are, supposed to be independent posts and institutions. They're supposed to be politically neutral. But you've noticed that some Rekha Sharma ji's, face is covered and she has brought a lot of disrepute to the institution. Because the NCW, what I've read, what I've in the public domain is that they were aware of it. They didn't raise a hue and cry. She didn't go and meet the Home Minister. And she's now claiming that first of all, let us show the letter. I'm sure there's no letter. Lies after lies after lies. So Rekha Sharma should be sacked first. And Ms. Rekha Sharma has been repeatedly only raising issues in opposition states. Now you see, Smriti Irani jumps to conclusion, jumps and shouts in the Lok Sabha कि बर्दाश्त नहीं होगा. सिर्फ भाजपा के समर्थक हैं तब बर्दाश्त नहीं होती है. आम जनता है तो फिर तो कोई चिंता नहीं. स्मृति ईरानी को कोई मतलब ही नहीं आम जनता के दर्द से. She called Biren Singh, I believe, and said this action should be taken. I mean, shameful. The Bharatiya Janata Party, Beti Bachao, Beti Padhao is no more a slogan. It was a warning to the people of India. Beti Padhao, Beti Bachao was a warning. Slogan नहीं था कि भाई साहब हम सत्ता में आएंगे तो आप अपना बेटी को बचा के रखिए. मणिपुर हिंसा पर पूरे 80 दिनों से चुप रहे प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार बोल पड़े हैं. वो भी सिर्फ 36 सेकंड, जब मणिपुर में सारी हदें पार हो गई. महिलाओं की नग्न परेड कराई गई, इंसानियत शर्मसार हो गई. तब साहिब का मुंह खुला है. वैसे भाजपा राज में महिलाओं से हिंसा कोई नई बात नहीं है. चाहे उन्नाव में रेप के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाना हो या फिर हाथरस की दलित बेटी का रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कराना, मोदी सरकार में हर बार साबित हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा ही धोखा है. मणिपुर की घटना इस बात की गवाह है. बीजेपी की बेशर्मी की इंतहा देखिए. दिल दहला देने वाली इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह तो सिर्फ एक घटना है जो सामने आई है. ऐसी सैकड़ों घटनाएं राज्य में हुई हैं.
अब सोचिए कि कितनी बेशर्म सरकार है। लोगों के साथ हो रहे जुल्म की जानकारी उसे है, परिस्थिति काबू में नहीं कर पा रही है, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मोदी जी, आप जवाब दीजिए, इतनी विभत्स हिंसा के बाद भी बीरेन्द्र सिंह अभी तक कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं? आज जब मणिपुर की घटना से पूरे देश में आक्रोश है, लोगों का दिल बैठा हुआ है, तब जाकर मोदी जी को मणिपुर याद आया। आज मोदी जी कह रहे हैं, मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। बीते 80 दिनों से मणिपुर जल रहा था, लोग मारे जा रहे थे, तब आपकी पीड़ा कहाँ थी मोदी जी? मणिपुर पर आप शर्मसार हो रहे हैं। अगर आपने पहले कार्रवाई की होती, सीएम का इस्तीफा लिया होता, तो देश आपको लानतें ना भेजता। अब आप गुनहगारों पर कार्रवाई का चाहे जितना भरोसा जताएं, देश की जनता आपकी सच्चाई जान चुकी है, आप पर से उसका भरोसा उठ गया है। जो भयावह तस्वीरें आज इस देश ने देखी, वो हर महिला, हर बेटी, हर बच्ची देखकर डरी हुई है। उनके मन में वापस विश्वास कैसे जगाएंगे साहिब? आज ये जो खौफ उनके दिलों में पैदा हुआ है, उसे कैसे मिटाएंगे? कहा गया है कि हम देश भर में अमृत महोत्सव बनाए जा रहे हैं। किस बात की महोत्सव? मणिपुर, मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। कितने दिनों से ये आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मौन व्रत और सारा कैबिनेट गूंगे और बहरे बन के बैठे हैं। मणिपुर में मेरे बहनें, मेरे बेटियां, इनकी हालात क्या है, क्या दिख रहा नहीं है? आज मणिपुर में आग लगी हुई है, क्यों सुनाई नहीं देती उन लोगों की आवाज? क्या उनकी कोई हक नहीं है संविधान का दिया हुआ? क्या वो देश के भागीदारी नहीं है? बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, वहां रिलीफ कैंप में रिलीफ की सहूलत कुछ नहीं है। ये सब झूठे बातें फैलाए जा रहे हैं। मुझे बताइए, मैं सवाल कर रही हूँ, राज्य सरकार क्या कर रही है? क्या बेहोश पड़ी है? और केंद्र सरकार ये क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री विदेशों का वाहवाही के लिए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सुनिए, फ्रांस में भी फोन की सहूलत है, ऑनलाइन, ट्विटर, हर बात की सहूलत है। वहां से सुनाइए हमारी मन की बात, हमारी तन की बात। ये जो अश्लील काम हो रहा है मणिपुर में, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? कुछ तो कहिए, एक लफ्ज बताइए, सुनाइए, क्योंकि मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। मणिपुर में आग लगी हुई है, घरें नाश हो गए, चर्चेस जला दिए, सड़कों पे कोई सहूलत नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, औरतों के बेइज्जती हो रही है। इस देश के बेटियां हैं, बेटी बचाओ, आपने कहा था ना, बचाइए। एक शर्मनाक, दर्दनाक हादसा सामने आया है, वो देश को शर्मसार करने वाला है, मन को विचलित करने वाला है। महिला सांसद होने के नाते मैं चाहती हूँ मणिपुर पे चर्चा हो। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें, देश की जनता को आकर पार्लियामेंट के माध्यम से जवाब दें कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीच में ये पूरा ड्रामा चला था कि चीफ मिनिस्टर को निकाला जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। आज तक देश की महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। और जब पूरा ट्विटर पे ये वायरल हुआ है वीडियो, जब उन पे प्रेशर आया है तो कहती हैं कि मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की। आज तक उन्होंने सीएम से संज्ञान नहीं लिया कि क्या वहां पे दर्दनाक हिंसा हो रही है, घटना हो रही है। तो मैं तो चाहती हूं कि ऐसी इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, देश की मोस्ट इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, जिन्होंने किसी तरीके का विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए। This happened 77 days back. There was not a single arrest made till this morning. And the reality is that the chief minister in also that viral video has said this is not an isolated incident and hundreds of such incidents have happened. With what right and with what moral authority does Biren Singh continue to be the chief minister of Manipur? Crime against women are happening right under his nose. There is absolute collapse of law and order. He continues to be in office, and that is the travesty of our times. The travesty of our times is that a video that was made 77 days back did not see a
single arrest, the Prime Minister issues a shameless statement. And instead of speaking on Manipur for a long time, in his 8-minute, 25-second video statement, he speaks on Manipur for 36 seconds and diverts the issue to Rajasthan and Chhattisgarh. I am absolutely certain that the Prime Minister knew exactly what was happening in Manipur. He did not wake up to that video which came from 77 days back yesterday. The Prime Minister is as complicit in this heinous crime, in this heinous case of sexual violence against women, like those people are in that video. 2 women naked in Manipur. Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, asked the government to take action. I think India's highest court is showing a mirror to an elected government. The elected government has looked the other way. Manipur has been burning. Women have been at the receiving end of this travesty of the sexual violence, of heinous crimes that are happening. The Prime Minister did not till this morning speak a word on Manipur. And even now he's making half-hearted, absolutely shameless statements on Manipur. The reality is that the Supreme Court taking suo motu cognizance is a huge slap on the face of an elected government here in the center and also in Manipur. They both stand in the dock. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है। देश में क्या चल रहा है इसकी उन्हें जानकारी ही नहीं रहती। मणिपुर पिछले 2.5 महीने से जल रहा है और मोदी जी मौन व्रत पर हैं, आंखें बंद किए हुए हैं और चुनाव जीतने के लिए गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। और मणिपुर में क्या हो रहा है, महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई जा रही है। पूरा देश शर्मसार है, लेकिन मोदी जी और उनकी महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की स्मृति गुम हो गई है। वे शायद भूल चुके हैं कि मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है। अब जब पूरे देश को समझ आने लगा है कि मोदी जी से सरकार नहीं चल रही है, तो बीजेपी ने इंडिया और भारत की बहस शुरू कर दी। लेकिन भारत का हो या इंडिया, मणिपुर है तो इसी देश का हिस्सा। ये बेवजह की बहस मणिपुर की उन भयावह तस्वीरों से ध्यान हटाने के लिए है। जिसने ये तस्वीरें देखी हैं उनकी रूह कांप गई है, कलेजा बैठ गया है। दरअसल भाजपा मणिपुर जैसा भारत बनाना चाहती है, जहां कोई बोले नहीं, सब चुपचाप दर्द और हिंसा को बर्दाश्त करते रहे और डर के साए में जिए। बीजेपी की बेशर्मी की इंतहा देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया तो वे कहते हैं कि यह तो सिर्फ एक घटना है जो सामने आई है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं राज्य में हुई हैं। अब सोचिए कि कितनी बेशर्म सरकार है। लोगों के साथ हो रहे जुल्म की जानकारी उसे है, लेकिन स्थिति पर काबू नहीं कर पा रही है, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब इस भारत की आवाज उठाने के लिए इंडिया की जरूरत है। सत्ता से जवाब मांगने के लिए आज इंडिया की जरूरत है। नफरत और निरंकुशता की जिस आग में मणिपुर जल रहा है, उस आग से भारत को बचाने के लिए इंडिया की जरूरत है। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में गांधी का सहारा उनकी लाठी बनी थी, इंडिया इस आधुनिक भारत की वही लाठी है, जिसका सहारा पाकर अत्याचार और सहती मौन आवाजें फिर बोल उठेंगी। इंडिया भारत की वो ढाल है जो मणिपुर की तरह फिर किसी राज्य को हिंसा और नफरत की आग से बचाएगी, बेटियों को अपमानित होने से बचाएगी। आज मणिपुर को पीएम मोदी के खोखले वादों और कायर चेहरे की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है मरहम की। इंडिया मणिपुर का मरहम है।